E-filing or importance of e-governance. Before going to discuss this, I would like to ask you, what is e-filing? E means what? Electronic. Very good. E means electronic. Electronic filing of documents by the taxpayers, citizens of the country. Now in which domain? Number one, different tax authorities like direct and indirect taxes. For direct taxes, income tax. You know, every return of income is now almost to be submitted online. When I was studying in SOBCom, we were standing in line to submit physical copy of income tax return. Today, every return is online. Nobody has to visit income tax office unless and until the notice has been provided. Is that clear? So this is what the scene for e-governance. For sales tax, now it is replaced by GST, Goods and Services Tax, as an indirect tax. You know, all the returns of GST are online. Every SSC has to submit monthly return online. Is that clear? Total 37 returns in 1 year are required to be submitted under GST. So monthly 3 returns, 12 3s are 36 and 1 annual return. So total 37 returns are submitted online. So nobody has to interact unless and until notice is given. This is called as e-filing. The definition of e-filing is that e-filing means it can be defined as the use of information technologies by the government authorities for the purpose of legal document submission. Is that clear? It is exercise of economic, political rights by the governments to transform the relations with the citizens of a particular country. That is an e-filing, electronic filing. So what are its advantages? Quick statutory compliances. So due date of submission of return is given. Every SSC can submit sitting at his office, business. He can submit online return. Quick compliance is there. Easy access, as the website is particularly provided. Immediately within seconds after finalization of data, SSC can file the document. Efficient services are provided. All circulars are given online. SSC has to check the website for due dates, changes in due dates, tax rates. Is that clear? I am just giving example of taxes. E-filing is a very, very wide term. Is that clear? Now you are submitting your examination form online to SPPU, Savitribai Phule Pune University. It is what? It is e-filing. It is e-governance, part of e-governance. So the things have been so sophisticated due to use of information technology. Easy access is there, efficient services are provided by different organizations. Verifications are done online. What exam form you have submitted, it is verified online, then you have got the payment link. Immediately you made the payment online. Your form is submitted, even for your admissions. Same way, the returns submitted by SSCs are verified online and the particular information is provided to the SSC. Is that clear? Effective governance. Very, very effective governance is possible due to use of information technology. As I told, when I was studying like you, we were standing in line for submission of income tax return. Getting refund checks, we were standing in line. We were getting checks for different SSCs. Now refund is automatically credited into the SSC's account if it is there. Central Processing Center of Income Tax is located in Bangalore. And every notice to every SSC in India is given through that server only. One copy is given to ITO, income tax officer of that particular city, ward, and one copy to SSC. Both comes to know that there is a notice, some problem is there. Now you may ask me how problem is located. That is the beauty of e-governance. जैसे इनकम टैक्स में आपको 50,000 कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, आपके बैंक में डाले गए या विड्रॉ किए गए. For every bank it is compulsory to provide the list of such bank account holders with their PAN numbers, permanent account number of income tax.
in AIR annual information return, ऑटोमेटिकली बैंगलोर के मशीन को पता चलता है कि इसके मशीन इसके अकाउंट में 2 करोड़ आ चुके हैं या इससे किसी को 10 लाख का पेमेंट किया, तो मशीन जनरेट्स नोटिस, प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ 10 lakhs 2 crores which is transacted in your account, which is not visible in your income tax return. So it is so automatic process, you can just imagine its importance. पहले ऐसा नहीं होता था, बिफोर द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन कहाँ ट्रांजैक्शन कर रहा है गवर्नमेंट को पता नहीं चलता था। डिसएडवांटेजेस में एक पॉइंट लिखा है मैंने, ओवरवॉच। आई टेल यू व्हाट इट इज। इफेक्टिव गवर्नेंस, इट सेव्स मनी एंड टाइम, नो नीड टू विजिट गवर्नमेंट ऑफिस, ensures government transparency, everything is online, everybody can check, every SSC has equal right to ask a question to the government, website is provided for queries and complaints, better services by Ministry of Company Affairs, MC is a part of Ministry of Law of Government of India which looks after the functioning of companies. These are the advantages of e-filing. Simultaneously there are 4 disadvantages also. Let us discuss on the other side of coin. Number 1 is inaccessibility. Okay, when server down issues are there, then I'll come to the same example. When you are submitting your exam forms, there was a server down issue. Again, university has extended date by 4 days. Am I right or not? So this is inaccessibility issue sometimes. The number of users are increased, data requirement is increased, and server becomes helpless to provide that requirement, complete that requirement. Second is hyper surveillance, overwatch on civilians. आपको मालूम है एक कंसेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है मालूम है? चले लेट अस कंप्लीट इट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में, निकम सर कहाँ खड़े हैं अभी, मेरे मोबाइल में लोकेशन है, यहाँ पे मेरा लोकेशन ऑन है, तो निकम सर पिंपरी के डी वाई पाटिल कॉलेज में खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? वो लेक्चर दे रहे हैं। ओके, आज उन्होंने क्या सर्च किया था इंस्टाग्राम पे? शूज सर्च किया था रेड चिप का, तो मुझे पूरा दिन भर में सिर्फ रेड चिप के ऐड आते हैं। अगर मैं फेसबुक पे जाऊं तो रेड चिप का ऐड आएगा, ट्विटर पे जाऊं या और कोई भी इंस्टाग्राम पे जाऊं, व्हाट्सएप पे भी देखो, मतलब आपका लोकेशन, आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या चॉइस है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप कहाँ हो, आपने कितनी सांसें ली है, इसका पूरा हिसाब सर्वर में बंद है गूगल के। समझ में आया? गूगल जितना जानता है अपने बारे में शायद हम खुद भी नहीं जानते। So you better understand its importance as well as disadvantage. कब लोकेशन ऑफ करना है, कब क्या नहीं सर्च करना है, ये आप सीख जाओ। हाइपर सर्वेलेंस, ओवर वॉच ऑन सिविलियंस। इनकम टैक्स का वेबसाइट है 26 AS, फोकस 26 AS। वो क्या है मालूम है? मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे किसी से पैसे मिले हैं 50 लाख और मैंने मेरा ट्रांजैक्शन शो नहीं किया मेरे रिटर्न में, मैंने टैक्स अवॉइड किया। अब जिस भाई ने 50 लाख पे किया, उसने बैंक से किया या उसने मेरा TDS कट किया और रिटर्न भर दिया उसका अपना खुद का, जिसमें मेरा नाम है कि मेरे नाम पे मेरे पैन नंबर पे 5 लाख रुपए कट चुके हैं यहाँ पे, तो वो 26 AS में ऑटोमेटिकली शो होता है। तो मशीन को पता चलता है सर्वर को कि यार इसको 5 लाख का TDS हुआ है 10% से, मतलब इसका पेमेंट कितना था 50 लाख, मतलब इसको मिला कितना है 45 लाख, जो ये शो नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली नोटिस विल बी जनरेटेड। अब ये ठीक है, इन लीगल सेंस इट इज ओके, एक्सेप्टेबल, बट ओवर एंड अबव आज के तारीख में देखो, आधार को लिंक है आपका मोबाइल नंबर, पैन नंबर को लिंक है आपका मोबाइल नंबर, आपके बैंक अकाउंट को लिंक है आपका मोबाइल नंबर, आपके वीजा को लिंक है आपका मोबाइल नंबर, पासपोर्ट को लिंक है आपका मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर को लिंक है आपका फिंगरप्रिंट। तो इंडिया में किधर भी जाओ, कुछ भी मैटर करो,
2 मिनट में यू विल बी अंडर नेट ऑफ गवर्नमेंट. समझ में आया? दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी. इससे लोग सुधर भी जाएंगे. आई सपोर्ट इट. बट साइमल्टेनियसली समवेयर इट इज क्रिएटिंग a leakage of privacy of citizens simultaneously. इतना ओवरवॉच अगर किसी को करेंगे तो वो जिएगा क्या बेचारा, डर डर के मर जाएगा. ओके, तो हमें एक कॉमन मार्क ढूंढना है इन सब में से. So you be intelligent, you are my students. Okay, cost of data 1 GB per day, 2 GB per day. उसमें भी नेट का स्पीड डाउन कर देते हैं, बरोबर. पहले फ्री में देते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं. अभी अगले 2 महीने में 1000 रुपए क्रॉस कर देंगे वो 2 GB पर डे का. लिख के ले लो, बरोबर. डेटा कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट टू द गवर्नमेंट. टावर बिठाओ, केबलिंग करो पूरा. इट इज वेरी वेरी हाई कॉस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. क्लियर? देन लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट. अभी सिर्फ मशीन बात कर रहा है, टैक्स पेयर हो या स्टूडेंट हो, बराबर. अब मेरा लेक्चर एक छोड़ा तो आपको सिर्फ सर्वर से गूगल से बात करना है. Am I right or not? For taxpayers also. इनकम टैक्स ऑफिस में अभी कोई नहीं जा सकता विदाउट इन्विटेशन, और उनका इन्विटेशन किसी को चाहिए नहीं होता है. जब नोटिस आएगा भाई ये टाइम को इधर हाजिर हो तो जाना है. पहले जब हम बच्चे थे तो हम घूमते थे बिंदास इनकम टैक्स, ये वार्ड वो वार्ड सब ऑल टाइम फ्री. अभी ऐसा नहीं है. अभी आज इनकम टैक्स ऑफिस जाओ, रजिस्टर में नोट करो, ऑफिसर को चेक करेगा वो काउंटर, ये क्यों आया है, फॉर व्हाट रीजन, इसको नोटिस है क्या, या तो निकलो. दिस इज लैक ऑफ. That's it. If any question, then you can ask any question. That's all. Thank you.